Hello friends, today we will start with the chapter 7.2 techniques of integration. Okay, from introduction point of view I have taken here a few results I just want to discuss with you. See, if while finding out the integration of any function, you have a function in the denominator and its derivative in the numerator, then what will be the integration? Just take a log of the function given, leave that derivative of, okay, plus c. For example, see, here is 2x upon x square into dx. Now this is the function f of x, its derivative is 2x, x square derivative is equal to 2x. 2x is available in the numerator, so leave this one, just write the log of denominator, that is log of function x square plus c. This is the first result. Second result, when you have f of x raised to power n, चाहे ये स्क्वायर है, क्यूब है, या फिर रेज टू पावर 4 है, 5 है, इट डजेंट मैटर, एंड कैन बी एनी नंबर सी. f dash x is multiplied by, if f of x, then what you have to do, leave the differential function, just write down f of x n plus 1 upon n plus 1. Okay, this is the second result. For example, see, 1 plus log of x square, you can write here cube also, cube, but I have seen this is the function and this is the derivative of this function 1 upon x. So just I am going to find out the integration of this function, means just going to 3 plus 1 and 3 plus 1, which will be equal to 4. Okay, this is your second result. Third result, if f of x into dx is equal to capital Fx, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो क्या करना है आपको, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी. एंटी डेरिवेटिव वही रहेगा, लेकिन यू हैव टू डिवाइड this integration by the coefficient of x, as here is a is the coefficient of x, divide it by a. For example, integration of sin of x into dx is equal to minus cos x plus c. Now I have replaced x by ax plus b into dx, which is equal to minus cos x. What is x here? Ax plus b, but its coefficient of x is a here, so you have to divide it by a plus c. Result बाकी वही रहेंगे, बस you should divide with the coefficient. Okay, these are some important results. Now here I have written some more results. See, first one is integration of tan of x. अभी तक हमने जो डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. अब हमने नया जो रिजल्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन कैन बी रिटन लाइक दिस. नाउ इन ऑर्डर टू मेक अप्लाई दिस रिजल्ट, कोस का जो डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस एक बाहर लिखा, एक माइनस यहाँ पे लिखा. नाउ I just going to apply this result. Function, this is the function cos x whose derivative lie in the numerator. So you should just write down the log cos of x, means log of cos of x, cos x plus c. Okay. अब this result can also be written like this: 1 upon cos x plus c, means reciprocal of cos x is secant x. It can also be written like this: secant x raised to power minus 1. Now minus 1 multiplied with minus 1 will give you plus 1. So this is the result. Means either
integration of antiderivative of tan of x into dx is equal to minus log of cos x plus c or log of secant x plus c. Similarly, I have written here a few more results. Derivative of cot x into dx is equal to log of sin x plus c, where x is not equal to even multiples of pi by 2. Now secant x into dx, this is equal to log of secant x plus tangent x plus c. Similarly, cosecant, there is minus sign, here is positive sign. Now here is cot, it's cotangent x, cosecant x minus cotangent x. This is the result. Okay. Now next is secant x into dx. अभी हमने secant x का निकाला था. Secant x क्या है? Log of secant x plus tan x plus c. This is the result. It can also be equal to log of tan of pi by 4 plus x upon 2 plus c. We will use all the result while doing the integration. Now let us start with the questions. Now this is the question number 1, ax plus b cube into dx. Now see, I am just going to apply this result I have written here. Okay. Now ax plus b raised to power n is 3. 3 plus 1, which is 4 upon 4 multiplied by coefficient of x here, a plus c. This completes the first question. Let us consider second one. I am just going to consider those questions which are either in NCERT book or are coming in the board exams, for example CBSE board. Now in question number 2, see, log x square upon x into dx. Now I have rewrite it like this, log x square multiplied by 1 upon x. Now this is the function and its derivative is multiplied with this function. So I am going to apply this result. When an f of x raised to power n साथ में उसका derivative होगा, तो but we have to do, leave the derivative, just take the function log of x and integrate. 2 plus 1 will give you 3 upon 3 plus c. This completes the second question. Now question number 3. This is also a very important question from examination point of view. See, मुझे नज़र आ रहा था कि its derivative may be this one. Okay, so I have taken it t. Now I have taken the derivative here. Then what I will get here? This is equal to dx dt upon 2. 2 को मैंने कॉमन निकाला, फिर उधर जाके डिवाइड कर दिया. ओके, सी, दिस इज योर न्यूमिनेटर, e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x into dx. This is your numerator, and denominator is equal to t. I am just going to replace these value. Numerator is dt by 2 and denominator is t, which is equal to 1 by 2. 1 by 2 आगे लिख लिया मैंने. This is 1 upon t into dt, which is equal to 1 by 2 log of, as derivative of t is 1. 1 is in the numerator, so you can write here log of t plus c. Now what is t? I am just going to replace the value of t here. T is e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x. This completes your third question. Now in question number 4, see, here I have x square plus 1 upon x plus 1 whole square. तो if I will create whole square in the numerator, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे इंटीग्रेशन में इजी हो जाएगा. तो बट आई डिड हियर, मैंने प्लस 2x कर लिया, माइनस 2x कर लिया, 2x को प्लस किया, 2x को माइनस किया. तो आई हैव क्रिएटेड हियर फॉर्मूला, दिस वन. दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड हियर. अलग से मैंने टर्म के नीचे डिनोमिनेटर लिखा, 2x की अपॉन जो है डिनोमिनेटर लिखा, 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया. दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज कैंसल आउट विद दिस स्क्वायर, देन दिस इज 1 इंटू डी एक्स माइनस 2. अब x था मेरे पास, x में भी 1 अगर मैं लिख लूँ, एक बार 1 माइनस कर लूँ, तो नीचे मेरे पास x प्लस 1 स्क्वायर है इंटू डी एक्स. तो व्हाट विल हैपन, हियर इज x माइनस 2 c. अब माइनस 2 है, उसे बाहर रहने देते हैं, बाद में ओपन करेंगे. c, x प्लस 1
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसके नीचे लिख दिया, इस टर्म के नीचे लिख दिया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. नाउ this is equal to x plus 1 into dx minus, it can be written like this, x plus 1 raised to power minus 2 into dx. Okay, this is equal to x minus 2. डेरिवेटिव ऑफ x is 1. तो अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होगा न्यूमिनेटर में तो यू कैन राइट इट एज log of x plus 1. Okay, minus derivative of this function is minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 plus c, which is equal to x minus 2 log of x plus 1. Now minus minus it will give you, this is minus minus तो आपको प्लस मिल जाएगा. तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट है माइनस 2 x plus 1 raised to power minus 1 plus c, or you can write it as x minus 2 of log of x plus 1 minus 2 upon x plus 1 plus c. This completes your fourth question. तो इजी है, जरा सा आपको दिमाग दौड़ाना आना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन, लुक इट वी केयरफुली. इतना डिटेल में कहीं पे भी नहीं एक्सप्लेन किया होगा. देखो, this is the given function. What I did here, I have created here x raised to power 4 in the numerator, so that I have divided this x by x raised to power cube, क्योंकि मुझे x raised to power 4 ऊपर बनाना था. Now I am going to take x raised to power 4 common. x raised to power 4 common निकाला जब आपने, तो there is one whole root cube, जैसे this one 1 upon 4, तो x raised to 4 will be divided by 4 here. अंदर आपके पास क्या बचा, here is 1 and here is also 1 because x raised to 4 आपने बाहर निकाली है. Divided by x raised to power 5. This is x, this is x raised to power 5. 1x is cancelled out with 1x here. You will get only x raised to power 4. So this is the function. इसे हमने modify करके लिखा है यहाँ तक. नो मुझे नज़र आ गया कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मैं इस तरह का मेरे पास फंक्शन आएगा 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4. तो मैंने ये किया, इस फंक्शन को मैंने t के इक्वल पुट किया, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 को t के बराबर पुट किया, उसे रीराइट करके लिखा एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू t. अब मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है. डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है 3x raised to power minus 4 into dx is equal to dt, which can be written like this, 1 upon x raised to power 4 into dx is equal to dt. t से उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस ऑल दीज वैल्यू. नाउ हियर इज 1 minus 1 upon x raised to power cube 1 upon 4 x raised to power 4 into dx. Now this function is t. So this is t raised to power 1 upon 4 and 1 upon 4 into dx. This is equal to dt by 3. Okay. So this is equal to 1 by 3 t raised to power 1 by 4 into dt. Now which is equal to 1 by 3 t raised to power 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 plus c. This is equal to 1 by 3 t raised to power 5 by 4 upon 5 by 4 plus c, which is equal to 4 by 15 t raised to power 5 by 4 plus c. What is t? Replace the value of t here. 4 by 15, what is t? t is 1 minus 1 upon x cube raised to power 5 by 4 plus c. This completes the question number 5. तो क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो. नाउ आई हैव कंसिडर वन मोर क्वेश्चन. सी, मुझे क्या नज़र आया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है. तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके पास पड़ा है तो हमें इसी फंक्शन पे जो वर्क करना होता है. तो इसलिए मैंने इसे टी पुट किया, डिफ्रेंशिएशन लिया. तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास कोस ऑफ 6x इंटू डी एक्स will be equal to dt by 6. I am just going to replace the value. इसकी वैल्यू मैंने क्या ली है t.
तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट टी इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज डी टी बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/6 टी रेज टू पावर 1/2 इंटू डी टी। तो मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है दिस फंक्शन को। तो इसको डिफ्रेंशिएट आप क्या करते थे, टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी विच इज इक्वल टू 1/6 टी रेज टू पावर 3/2 plus c which is equal to 1/6. What is t? What is t here? This is t is 1 plus sine of 6x raised to power 3/2 upon 3/2 means this is 2/3 plus c which is equal to 1/9 1 प्लस साइन 6x ऐसे लिख के what you can do here, this can also be written like this 3/2 means 1 and 1/2, so 1/2 का मतलब क्या है 1 प्लस साइन ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ओके, प्लस सी। This completes your 6th question. In tomorrow's session we will do some more question on this worksheet. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।